Thank you for joining us. It's indeed a proud privilege to have the 50th CJI of India. हम सभी को पता है कि आप उड़ीसा के दामाद हैं. So with your permission, can I ask few questions in Odia अगर आप उड़िया समझते हैं? समझ तो लेता हूँ, पूरी समझ लेता हूँ भाषा. बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कभी-कभी. जस्टिस चंद्रचूड़ केमिति अछंती? बस मैं बोलता हूँ मेरी सांस के साथ, क्योंकि मैं गलत भी बोलूँ तो भी तुमको सही लगता है. पत्नी को मैं सही भी बोलूँ तो गलत लगता है. काली दर्शन भलो हला महाप्रभु जगन्नाथ का. भलो अच्छी. The Chandrachud is hardly 3 months since you have retired. Yes. So how are you missing the courtroom, the black and white uniform? Obviously you miss the courtroom on the very first day when you realize that you're not going to go back to court and wear your black coat and bands and deliver justice. But then on retrospect, you realize that the world outside is so much larger than the confines of the courtroom. And I was a judge for 25 years. 25 साल मैं जज रहा. और अब मुझे पता चल रहा है कि कितना कुछ समाज में परिवर्तन आया है. Indian society has completely transformed. Not that we didn't understand it, but we understood it through the cases which we decided. Now I decided from the point of view of interpersonal contact, hearing the stories of others, speaking to citizens, young Indians. So all in all, it's been a time of learning for me and enrichment after November. Sir, with all regards to judges, एक जनरल परसेप्शन हमारा है कि जजेस काफ़ी सीरियस होते हैं, कम बोलते हैं, दे हैव फ्यू फ्रेंड्स, बट आप एक अलग ही शख्सियत हैं. आप बहुत खुल के बोलते हैं, शेर व शायरी करते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं. सो गुस्ताखी माफ हो सर, बट आप जज कैसे बन गए? इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर्स इंस्पिरेशन, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI ऑफ इंडिया, जस्टिस वाई चंद्रचूड़. आपके सवाल का शायद ये मायना है कि ये सब आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी जो शैली है, इसको लेके आपको जज किसने बनाया? जज किसने? थोड़ा सा आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? नहीं, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं हटकर मैं अपना ज़िंदगी जिया हूँ. ख़ास तौर पे शुरुआत से जब मैं स्कूल में था तो कई बार अक्सर मैं शाम को स्कूल होने के बाद हाई कोर्ट जाता था ताकि पिताजी के साथ गाड़ी से वापस घर जाएं, नहीं तो बस से जाना होता था हर रोज़. और वहाँ बम्बई उच्च न्यायालय में हर एक फ्लोर पे ऐसी जालियाँ हैं जिन जालियों से आप नीचे वाले फ्लोर को देख सकते हैं. तो मैं शाम को बस 4वीं-5वीं कक्षा में था, तो मैं ऊपर खड़ा रह के जालियों से देखता रहता था कि नीचे कैसे कोर्ट चल रहा है. तो शायद उससे मुझे प्रेरणा मिली. घर में पिताजी बात करते थे जजिंग के बारे में, कोर्ट के बारे में, पर मैं समझता हूँ कि जो अपना अपब्रिंगिंग है, ख़ास तौर पर आप स्कूल में होते हैं, उसका तो श्रेय होता है, पर बाद में जो आपको आपके जो विचार शैली पैदा हो जाती है वो आपके अनुभवों से भी तो होता है. तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर इम्पॉर्टेंट अप टू अ पॉइंट, but I do believe that what you acquire later on in life in terms of your own experiences, your own contact with society is equally important. But you had not entered the courtroom till your father was in office. My father made an announcement when I was traveling with my parents to Allahabad and I was in law school. My father made an announcement that so long as he is in office, I will not enter a courtroom, because he was deeply concerned about nepotism in the judiciary. और वो सोचते थे कि देखिए वो तो भारत के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश थे, कोई भी कोर्ट हो वो उनके कोर्ट के नीचे के स्तर का है. तो इनकी बड़ी इच्छा थी कि जब तक वो ऑफिस में हैं, चीफ जस्टिस कार्यरत हैं, मैं किसी भी कोर्ट में काम नहीं करूं. इसके लिए मैंने फिर अप्लाई किया. मुझे एडमिशन मिली हार्वर्ड लॉ स्कूल में, फुल स्कॉलरशिप भी मिली. पिताजी ने मुझे कहा था कि देखो मेरा प्रोविडेंट फंड है, उस समय प्रोविडेंट फंड में करीब 4.5-5 लाख रुपए थे 20 साल के सर्विस के बाद, 1962 से 1982 तक.
और उन्होंने कहा ये सारा जो पैसा है प्रोविडेंट फंड में, ये आपके लिए है, आप अपनी पढ़ाई पे खर्च करो, पढ़ाई पे खर्च करोगे तो व्यर्थ नहीं होगा। अब मुझे फॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप मिल गई और मैं 3 साल हार्वर्ड लॉ स्कूल गया। तब तक वो रिटायर हो गए थे। उनके रिटायरमेंट के बाद मैंने ज्वाइन की प्रोफेशन। So at the age of 38, I think if I'm right, आप पहले जज बने। I was asked, I became Additional Solicitor General of India at the age of 38. I was asked to become a judge at 38, but my file was returned on several occasions by the President of India, I believe, to the then collegium on the ground that I should become older. And eventually I was appointed as a judge of the High Court when I turned 40. I feel this is a problem. I'm not talking about the decision in my case. पर मैं सोचता हूँ कि ये एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। देखिए, आज जो देश है वो नई पीढ़ी का देश है। We are reaping the demographic dividend in India, as we say. And yet, we believe that maturity only comes with age. There is some disconnect here. I think we have to increasingly trust the younger generation to assume important positions of responsibility. But, you know, I also wanted to share with you that my coming into the legal profession was a little bit of an accident, because after I completed my BA in Economics Honours at St. Stephen's College in Delhi, I thought that I should really do my post-graduation in economics, because I had topped the Delhi University. और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो टर्म थी वो थोड़ी देर से शुरू होने वाली थी। द लीगल एजुकेशन एट कैंपस लॉ सेंटर कमेंस्ड अर्लियर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टहलते हैं, देखते हैं क्या होता है लॉ कॉलेज में। एक बार लॉ कॉलेज में बैठ गए तो वहीं ज़िंदगी भर की उसी में बैठ गए, फिर कहीं और कहीं जाने का सवाल ही नहीं हुआ। तो सर, इन 24-25 सालों में जो जजमेंट आपने दिया, हिस्ट्री विल रिमेंबर यू। सम द ग्रेटेस्ट जजमेंट, अयोध्या वर्डिक्ट हो, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर देना हो, डिक्रिमिनलाइजेशन सेक्सुअलिटी, सबरीमाला केस, नॉट मेनी केसेस। अगर अयोध्या वर्डिक्ट की बात में उसके बारे में आपसे पूछूं सर, 1045 पेजेस का जजमेंट, हाउ डिफिकल्ट चैलेंजिंग इट वाज, और जो सोशल मीडिया में बात आई, आप भी कभी प्रभु के सामने ये प्रार्थना किए थे कि मुझे सही दिशा दिखा देना, क्या इस ठीक बात है सर? देखिए, जब हम अयोध्या का जजमेंट, हम अयोध्या के केस में सुनवाई चल रही थी, तो ये बड़ा कठिन और जटिल मामला था। 300-400 सालों का इसका इतिहास था और देश में इसकी वजह से काफ़ी कुछ बदलाव हुआ था। अब जब हम ऐसा मसला सुनते हैं जजेस, तो एक ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये फर्स्ट अपील थी, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहला निर्णय दिया था, उसके खिलाफ फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी। तो चाहे वो अयोध्या का फर्स्ट अपील हो और किसी मामले का फर्स्ट अपील हो, आप जज के नाते एक जो साधारण आपके जो सिद्धांत हैं फर्स्ट अपील सुनने के लिए, उसी को अप्लाई करते हैं। तो मामला कितना छोटा हो, मामला कितना बड़ा हो, हमारी न्याय प्रणाली का एक मूलभूत सिद्धांत ये है कि आप उसी सिद्धांत को, उस मामले को आप लागू करेंगे। और अब इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हमारे सामने। 30,000 से ज़्यादा पन्ने का रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड में बहुत 300-400 सालों के पहले के दस्तावेज थे, जो संस्कृत में थे, उर्दू में थे, गुरमुखी में थे, अलग अलग भाषाओं में थे। बहुत सारे विटनेसेस को देखना था। और जब सुनवाई हो रही थी, उसके बाद 3 महीने बाद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, जस्टिस गोगोई, वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो थोड़ा सा वो समय का भी बंधन था हम लोगों पे कि ये सुनवाई ख़त्म करके फिर जजमेंट भी लिखाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने पूछी मुझे कि क्या आपने प्रार्थना की थी, मैं आपको ये, मैंने पहले भी कहा है कि ये सवाल मुझे मेरे गांव गया था। ये कनेरसर नाम का गांव है और छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, पूना के करीब 2 घंटे के दूरी पे है। और वहाँ पर मैं जब गया था तो मुझे लोगों ने ये पूछा
कि आपके कोर्ट में इतना तनाव जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये तनाव और इस संघर्ष के बीच आप अपनी शांति कैसे रखते हैं? अक्सर क्योंकि आजकल तो सारा लाइव स्ट्रीमिंग होता है, तो लोग देखते हैं कि मैं चिल्लाता विल्लाता ज़्यादा नहीं हूँ, मैं घर में भी नहीं चिल्लाता हूँ, कोर्ट में भी नहीं चिल्लाता हूँ। कभी कभार गुस्से हो जाते हैं। नहीं, बहुत मुश्किल से। तो मुझे ये जब पूछा तो मैंने कहा देखिए, हर एक व्यक्ति का संघर्ष तो हमारे सबके जीवन में संघर्ष के समय आते हैं। आप सारे आपके व्यूअर्स हैं, ऐसा कोई भी व्यूअर नहीं होगा जो ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन में संघर्ष नहीं हुआ है। तो मैंने ये कहा कि हर एक का मंत्र अलग होता है, हर एक का जो उनका रास्ता होता है वो अलग होता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हर रोज़ सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, योग करता हूँ मैं पिछले 24-25 साल से, और मैं 1 घंटा हर रोज़ सुबह अपने मनन में, मेडिटेशन में और पूजा में मैं बिताता हूँ। अब इससे और पूजा में किसी एक डेइटी की पूजा नहीं करता हूँ मैं। अपना जो विश्वास है, अपना जो धर्म है, चाहे किसी भी धर्म के हों आप, आपको क्या सिखलाता है? यही सिखलाता है दैट द essential humanity of all individuals is something which every religion teaches us about. I've been reading a very interesting book actually on which is titled India's Ideas of Freedom, or the book deals with the ideas of freedom which have been developed by 7 of the greatest thinkers known to modern India. And they speak of internal freedom and external freedom. Internal freedom is something by which you transform yourself. External freedom is the freedom which you derive in transforming society. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि चाहे आपकी श्रद्धा किसी भी मज़हब में हो, किसी भी भगवान में हो, या आपकी श्रद्धा ना भी हो, ये हर एक का व्यक्तिगत सवाल है। पर यदि आप श्रद्धालु हैं, अपने धर्म में आप विश्वास रखते हैं, तो कोई भी धर्म आपको एक ही चीज़ बतलाता है कि कोई भी व्यक्ति हो समाज में, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीवित चीज़ हो, चाहे सौंदर्य हो, जैसे प्रकृति हो अपनी, उसका हम लोगों को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में समानता से हम उसको ट्रीट करें, ताकि every citizen who comes to seek justice before the court is equal in the eyes of the court, irrespective of the faith which they profess. तो जब मैं हर रोज़ भगवान के सामने पूजा करता हूँ, तो मैं यही सोचता था जब मैं जज था, और आज भी सोचता हूँ। आपको पता है कि जैनिज्म में एक बहुत अच्छा मंत्र है, नौकार मंत्र, नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो वज्जाणाम, नमो लोए सर्व साधुनाम, ऐसो पंचमुक्कारो सब पाव पण सुनो, मंगलम च सिद्धेसी सर्वम परम मंगलम। तो इसका मायने, जब मैं कोर्ट की स्टेप्स हर रोज़ मैं ऊपर जाता था बैठने के लिए, तो मैं नौकार मंत्र मेरे मन में हर रोज़ कहलाता था, ताकि हम सोचते यही थे कि मेरे हाथ से किसी को अन्याय ना हो, क्योंकि ये जो न्याय की प्रणाली है, इट्स अ ह्यूमन सिस्टम, राइट? आप उस समय आपको जो उचित लगता है वो निर्णय देते हैं। आपको समय नहीं होता है कि आज मैं सुन लूँगा, मैं 15 दिन के बाद सोच लूँगा कि इसको बेल देनी है नहीं देनी है। कई मामले ऐसे होते हैं, उस क्षण में आपको निर्णय देना होता है। सर, अब इसी के बारे में बोल रहे हैं तो मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल भी है। इतने सालों में डू यू गेट स्ट्रेस, डू यू गेट नर्वस कि ये आज अहम फैसला का दिन है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सारी बातें भी जहन में आती हैं क्या? देखिए, नर्वस शुरुआत में तो हर एक जज तो नर्वस होता ही है। जैसे मैं बहुत बार टीवी के सामने बोलता नहीं हूँ, तो आज थोड़ा सा नर्वस भी हूँ मैं। पर मैं आपको असलियत ये बताता हूँ कि थोड़ा सा समय जाने के बाद आप नर्वस तो नहीं बनते, पर एक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज होता है कोई व्यक्ति, तो आपको ये तो पता होता है कि मेरे हाथ से गलती हो तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है।
जब मैं हाई कोर्ट में जज था तो कम से कम ये तो लगता था कि भाई मेरे हाथ से कोई गलती हो जाए तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी है कि कोई मेरी गलती को सुधार सके। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तब ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इसके ऊपर कोई है ही नहीं, यानी कोई कोर्ट तो है ही नहीं इसके ऊपर। तो आपकी एक गलती हो, आपके दिल में तो ये बहुत परामर्श होती है चीज़ कि मेरी कोई भी गलती हो तो कौन सुधार सकता है। तो आप जब निर्णय लेते हैं तो बहुत गौर से समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी का अनुभव मैं सोचता हूँ कि हर एक न्यायाधीश को होता है। सर, हाल ही में मैं कश्मीर गया था तो वहाँ पर जो लोगों से बातचीत हुई, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन जजमेंट आपका ही है, तो कई से लोगों का अभी का मानना है वहाँ पर कि हमसे स्टेटहुड छीन ली गई। हालांकि वहाँ पे इलेक्शन हुआ, नया सरकार बनी है, तो आगे आप उसके लेकर क्या देखते हैं? जम्मू कश्मीर को लेकर वर्डिक्ट के बाद अभी जो सिलसिला वहाँ चल रहा है उसके लेकर आपका ओपिनियन क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, उस समय हमने जब सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहस कर रहे थे। तो उनको हमने सवाल पूछा कि आज जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्टेटस यूनियन टेरिटरी हो गया है, क्या ये परमानेंट है, ये क्या टेम्पररी है? आप हमें बताइए, टेम्पररी हो तो किस हद तक ये टेम्पररी रहेगा और इसमें आप कब फिर से स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो बहस कर रहे थे, उन्होंने हमें कहा कि मैं इस पर खुद जवाब नहीं दे सकता, मुझे एट द हाईएस्ट लेवल कंसल्ट करना पड़ेगा। और वो 2 दिन के बाद वापस आ गए हमारे सामने जब सुनवाई चल रही थी और उन्होंने अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दे दिया सुप्रीम कोर्ट को दैट द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दैट द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर is going to be done. There's an unconditional undertaking by the government of India to restore statehood to Jammu and Kashmir at an appropriate point of time. And we recorded that undertaking of the government. And I believe that issues of constitutional governance cannot proceed on the basis of mistrust. देखिए, जहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र का सवाल है, in the political sphere, you proceed either on the basis of trust or mistrust. In the constitutional sphere, when you're told at the highest level that a decision has been taken by the government of India that restoration of the statehood of Jammu and Kashmir will be made, we have accepted that, and I don't see any reason why we should distrust a statement which was solemnly made to the Supreme Court. At the same time, you have to understand that the conditions in Jammu and Kashmir are unlike the conditions in any other state in India. And therefore, if all of us truly are committed to the idea of the integrity, the oneness, and the wholeness of our nation as one indestructible nation, we have to understand the peculiar circumstances of a particular state like Jammu and Kashmir. But we have accepted the unconditional undertaking of the government of India that they will restore statehood both for Jammu and Kashmir. Sir, while hearing and delivering such kind of very important judgments, हमेशा ये कहा जाता है कि क्या इंडियन जुडिशियरी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है? See, political pressure in the sense that you are asking me, obviously not. A sense of responsibility about the political consequences which you decide, every judge necessarily has to bear as a consideration. What is the impact of the consequence of my decision to the rest of society? But यदि आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि आप पे कोई राजनीतिक दबाव होता है, तो बिल्कुल नहीं। और उसका उदाहरण यही है कि आपने इतने जो निर्णय बताए जो सरकार के खिलाफ गए हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का निर्णय है, सरकार की राय एक होती है, हमारा निर्णय अलग होता है। तो दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट दैट जजेस डिसाइड इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर कॉन्शियंस एंड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। सर, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। हाउ डू यू सी कि जुडिशियल रिफॉर्म अभी इंडिया में
दिशा में जाना चाहिए, बिकॉज यू हैव बीन चैंपियन ऑफ ट्रांसपेरेंस, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन जुडिशियरी। लाइव स्ट्रीमिंग आपकी वजह से शुरू हुआ, एंड उसका इम्पैक्ट अभी आप क्या देख रहे हैं, आगे चलकर क्या होने वाला है? I'll divide my answer very briefly into two parts, because you asked me in the first a question on judicial reforms and the other was technology, live streaming. So I'll briefly deal with both. Insofar as judicial reform is concerned, we are now moving towards a highly developed economy. India is completely different from what it was when, say, I was growing up in the 1960s and 1970s. Now, if we have to take our nation to the next level of a fully developed society, judicial reforms will be crucial, because the existence of the rule of law and an efficient judicial system is critical for the realization of rights of citizens, and it is critical to the prospering of business. From both perspectives, what does an investor really want today? An investor wants transparency, objectivity, certainty, and efficiency of outcomes. Now, the judge to population ratio in India is extraordinarily low. We require more judges as compared to the workload which our judges do. That's the first aspect. Second, we need an enhancement of infrastructure in the Indian judiciary, right from the level of the district courts through to the level of the high courts across India. Third, we have to ensure that all vacant positions in the Indian judiciary are filled up as expeditiously as possible. Now, recruitment to the district judiciary does not fall under the jurisdiction of the Government of India or the Supreme Court for that matter. Recruitment to the district judiciary is a state subject. It is carried out by the governors in consultation with the high courts. अब आज जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसीज हैं, करीब करीब 21% जगह आज रिक्त हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। तो मैं सोचता हूं कि आज हम लोग इस पे ज़रूर विचार कर लें कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या हम ला सकते हैं, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जैसे सिविल सर्विसेज हैं उसके मॉडल पे या अलग थोड़ा सा उसमें बदलाव लाकर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाना मेरे राय में बहुत ज़रूरी है। जो राज्य सरकार आईएएस आईपीएस होते हैं, ऐसे इंडियन जुडिशियल सर्विस भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अच्छा, राज्य सरकारें जो हैं वो कहते हैं कि देखिए आज we have a federal structure, so the states are concerned with the fact that will an Indian judicial service dilute Indian federalism? Now, my answer to that is this, that you should have one common examination for recruitment all over the country, so that you will get the best from across the country. Someone from, say, Tamil Nadu can come to Odisha, somebody from Odisha can go to Meghalaya, somebody from Maharashtra can go to Jammu and Kashmir, from Jammu and Kashmir to Gujarat, so that we will really subserve the entire purpose of integrating India into one nation. Now, states are concerned about the fact that they have reservations. Different states have different reservations. But what can be done is to have one common entrance examination. Recruitment should be made on the basis of the merit list in that examination, applying the reservations in each particular state. Iski badi zarurat hai. We have to also change mindsets. The lawyers particularly sometimes really obstruct particularly criminal justice administration by asking for adjournments, by not being ready with their cases. So I think there is also the need for bringing about a mindset on the part of those who are vital stakeholders in the process of delivery of justice. इसी की वजह से पेंडेंसी बढ़ रही है, जो तारीख पे तारीख बताया जा रहा है। अच्छा, तारीख पे तारीख जो है ये इसकी जिम्मेदारी जजेस को देते हैं, पर तारीख पे तारीख जो है जज की जिम्मेदारी अक्सर नहीं होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्रिमिनल केसेस में अब मान लीजिए कोई मुलजिम है, अब क्रिमिनल केस में समन्स सर्व करने हैं, वो जज कभी समन्स सर्व नहीं करता है, पुलिस की यंत्रणा जो होती है वो सर्व करते हैं। अब पुलिस के अफसरों को कितनी ड्यूटीज होती हैं, अलग अलग उनके जिम्मेदारियां होती है। अब जब तक विटनेस पे समन्स ना जाए, अक्यूज जो बेल पे है उसको समन्स ना जाए, तब तक ट्रायल तो चल ही नहीं सकती। अब टेक्नोलॉजी की जो आपने बात की, टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ एक सवाल है जी, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी की ओर रुख करेंगे।
अक्सर ये देखा गया है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और कई मसलों पर हाई कोर्ट में भी, दे डोंट गिव बेल इन द फियर ऑफ स्ट्रिक्चर आ जाएगा, या इसी को लेकर कभी कभार मतलब इससे पेंडेंसी बढ़ती है, लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक रुख करना पड़ता है. डू एग्री विद दैट? I'm very deeply concerned about the fact that there is a reluctance on the part of the district judiciary to grant bail. Now, the district judiciary is the first point of interface with common citizens. And therefore, it is important that the district judiciary applies two principles. The principle of the presumption of innocence, that is, every accused is presumed to be innocent until proved guilty in the trial. Second, that bail should be the normal rule, jail should be the exception. Obviously, there are some cases where you have to deny bail. For instance, suppose it's a very serious offense. Say a serious offense where somebody has been accused of murdering or a dowry death, or the murder of a spouse on the ground of dowry. You'd be very reluctant to grant bail immediately in a case like this because it has a wider social impact as well. So a judge has to also not just look at the interest of the accused, but also the interest of the society. Suppose somebody is guilty of, or not guilty of, but alleged to have committed rape and murder. Would you want to grant bail to a person like that? No. For the reason that there you have to protect the interest of society. But at the same time, आप सोच लीजिए कई केसेस ऐसी होती हैं कि आपके विटनेसेस हैं, 100 विटनेसेस हैं केस में. अब ये ट्रायल को 7-8 साल लग जाएंगे. आप उस व्यक्ति को कितना अंदर रखोगे जेल में? और मान लिए 7-8 साल के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है. वो 7-8 साल तो उसके ज़िंदगी में तो चले गए. But there is a reluctance on the part of the district judiciary to grant bail. But why is it? You will ask me the next question, why is it? Yes. And the reason is that we generally live in a culture of distrust today. We don't trust our public officials, and judges are no exception. Now, if a judge grants bail, as if a district judge grants bail, and even if that bail is cancelled, I believe we shouldn't be passing moral strictures on the district judge. Well, if a wrong grant of bail has been made, it can be reversed by a higher court. But this really compounds the problem. जो bail district को देना चाहिए था, district judiciary का, वो देते नहीं है, वो high court में आ जाता है. जो bail high court को देनी चाहिए थी, वो देते नहीं है, वो supreme court में आ जाती है केस. तो इससे सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी भी बढ़ जाती है. अच्छा, लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक आने में खर्चा भी कितना होता है, समय निकल जाता है. So I completely agree with you that there has to be a rethink. But the answers are not just in law. The answers are also in relation to what is the prevailing culture in our society. ये तो होना नहीं चाहिए कि आप कोई किसी व्यक्ति को रिलीफ दे दें तो आप उसके बारे में ये कहें कि नहीं कुछ और गड़बड़ हो गई होगी इसलिए रिलीफ दे दिया है. Judges are worried about it. You see, the district judiciary is very worried about it. And this is something which we have to deal with. सर, अगर ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी टू कोर्ट रूम की बात करें में, तो लाइव स्ट्रीमिंग एक बड़ा गेम चेंजर रहा है, एंड यू हैव बीन चैंपियन इन दैट. तो उसका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग हमने कोविड में शुरू कर दिया था. कोविड में जब लॉकडाउन हो गए थे तो कोर्ट में तो लॉकडाउन हो नहीं सकती थी, तो हम घर बैठे बैठे सारे केसेस तय करते थे. कोविड खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको वी शुड यूज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. लाइव स्ट्रीमिंग का ये बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि वी हैव बीन एबल टू टेक द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द होम्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल. अल्टीमेटली, व्हाई डू वी एग्जिस्ट एज कोर्ट्स? वी डोंट एग्जिस्ट फॉर द जजेस एंड द लॉयर्स. वी एग्जिस्ट फॉर सिविल सोसाइटी, फॉर आवर सिटीजन्स. एंड अब आप सोच लीजिए, आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में उड़ीसा के किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में एक कोई केस चल रहा है, या मेघालय में, या मणिपुर में, या बारामूला में केस चल रहा है, या गोंदिया में चल रहा है, कहीं पर भी. तो वो जो लिटिगेंट है, उसका पेंशन का केस हो, उसके सर्विस का केस हो, वो जब सुनता है और उसको ये पता चलता है कि कितने सीरियसली, कितने अंदाजे से उसके बारे में बहस हो रही है, शांति से बहस हो रही है, तो उसकी आस्था हो जाती है अपने सिस्टम में. So live streaming has really promoted a sense of accountability, confidence, accountability on the part of judges as well. कि आप जो आपका conduct है कोर्ट में, जज का बिहेवियर है कोर्ट में, वो भी ठीक होना चाहिए. वकील,
अब लाइव स्ट्रीमिंग के वजह से लोगों को ये पता चलता है कि जो तारीख पे तारीख है, अरे तारीख कौन मांग रहा है? जज नहीं मांग रहा तारीफ पूछने वाले अलग होते हैं. सो इट्स सेंडिंग अ ह्यूज मैसेज ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. उसके अलावा हमने डिजिटाइजेशन किया है. और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ. 15 अगस्त 1947 से और ख़ास तौर पर 1950 से सुप्रीम कोर्ट के 37,000 निर्णय हैं जो कि सारे हिंदी में हैं, अंग्रेजी में हैं. Now, all the decisions of the Supreme Court, if they are in English, how does a common citizen understand them? We don't write these decisions only for ourselves. Of course, we apply our earlier decisions. So when I became Chief Justice of India, I took a decision that we will translate all the 37,000 judgments of the Supreme Court into every Indian language which is recognized by the Constitution. और ये हमने शुरुआत की through the use of artificial intelligence, through the aid of AI assisted software. और उसकी वजह से आज सारे 37,000 निर्णय हिंदी में अनुवाद कंप्लीट हो गया है, पूरा अनुवाद हो गया है. पंजाबी में करीब 22,000 से ज़्यादा निर्णयों का अनुवाद हुआ है. उड़िया में हो रहा है, बांग्ला में हो रहा है, मराठी में हो रहा है, तेलुगु में हो रहा है, पंजाबी में हो ही रहा है. तो इससे लोगों को पता चलता है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें जो काम चलता है, उसमें कार्य चलता है, वो मेरे जीवन में उसमें असर कैसे है. आपको और एक मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ. एक दिन जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था तो मैं हमारी राष्ट्रपति मैम के साथ चर्चा करने के लिए मुझे जाना था. तो हम जब बात कर रहे थे इसके बारे में तो द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन टू मी, शी सेड दैट चीफ जस्टिस, ये जो आप सीधा अनुवाद कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, पर आप, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप ये अनुवाद संथाल में भी करें, क्योंकि मेरे जो ट्राइबल्स हैं, हमारे ट्राइबल्स हैं, उनके लिए जो निर्णय हैं उनको पता भी चले, कम से कम ट्राइबल राइट्स के जो निर्णय हैं. तो वो भी प्रक्रिया हमने शुरू की. बहुत ही बढ़िया सर. ये लाइव स्ट्रीमिंग का एक फ्लिप साइड भी है कि जजेस आर बीइंग ट्रोल्ड. आपको भी काफी ट्रोल किया गया. एंड ऑन द अदर साइड देयर आर सम स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो कि ट्राई कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए जजमेंट को. उसके बारे में क्या बताएंगे? I don't think trolling is because of live streaming per se. Today we live in an age of social media, and you're going to be discussing about social media. I was just listening to the introductory remarks, and everything that is said in the court today is reported by the second on social media. So even if you didn't have live streaming, you would still have reporters who are present in the court who would be reporting on social media what is taking place. Ab live streaming se the impact to the court is much larger. Somebody sitting in a remote part of the country has become a citizen journalist and can report on everything that they feel is happening in a court. Now, the trolling is one aspect, but I always look at the positives. Look at the positives of live streaming: transparency, accountability, the faith of citizens. Now, trolling is the flip side. But we live in an age of social media. It's the new normal. And I don't think we should be fearful of the trolling on social media as a reason not to do our work. सर, अभी हाल ही में देखा गया है जो मीडिया में रिपोर्टिंग होता है, लोगों का एक्सपेक्टेशन जुडिशरी से काफ़ी बढ़ा है. People expect that in so many public interest matters, court should take so much cognizance. इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं जज बना था तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैंने एक अखबार में कुछ पढ़ा था सुबह, और मुझे लगा कि हम लोगों को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए. तो उस समय मेरे जो चीफ जस्टिस थे उनके चेंबर गया मैं सुबह, और मैंने कहा कि देखिए आज अखबार में ये आया है, इसका हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए. तो उन्होंने मुझे कहा कि बैठो मेरे साथ. तो उन्होंने कहा ठीक है, आज ये मसला इट्स इम्पॉर्टेंट. But where do you draw the line? Will you start taking cognizance, suo moto cognizance, of everything of importance which you see in the newspapers? Or
as a Supreme Court, will you take cognizance on your own? Suo moto means without somebody moving you, right? Where you yourself learn of something and you take cognizance. Or will you take cognizance of some very important national issues? The high courts are there to take care of local issues. And we must therefore trust our high courts to take cognizance of issues which fall within the jurisdiction of the states. The Supreme Court is there as a national institution. But the danger of courts expanding the suo moto jurisdiction beyond manageable proportions is that the court may itself become dysfunctional. समाज में तो हर जो मसला निकलता है, आप इसमें आप अपना कुछ हस्तक्षेप करें. Also, we have to understand that apart from the judiciary, there are other organs of the state, the legislature, the executive, who have policy-making authority. And therefore, the court must draw the Lakshman Rekha, or the line which divides the work of the courts from the work of the executive and the legislature. So to make the conversation more interactive, आपके permission से क्या हम audience से कुछ question ले लें? हाँ, बिल्कुल. I'd be happy to take questions. Please hand over the mic, please. Good morning. My question, of course, like it's probably emanating the fact from the fact that you have been talking trust and mistrust. That's a very wonderful subject to probably debate upon. I do operate internationally my share of in the corporate world, and India has been growing by leaps and bounds, both in terms of economic growth, social reforms. And no doubt, like India is today recognized as a force probably in like around the world. Unfortunately, even today, when you talk to any kind of, like international corporates, when it comes to the Indian judiciary, especially in the area of intellectual property, in the area of arbitration, do you think there has been an improvement in that perception in the international world as well? People would start saying that, okay, fine, I'm fine to have arbitration as per Indian law. I'm fine to, sign an agreement which is, like the court is Indian law. Is that something have you experienced over the years now? There was a time going to arbitration, there was a time when we were to come to terms with arbitration as an effective form of dispute resolution. Over the last decade, the Supreme Court has taken numerous decisions which have enhanced the autonomy of parties, because when parties decide to go to a private arbitral forum, they trust a private tribunal as opposed to going to a court, which will result in greater delay. Now, when a business dispute goes to an arbitral tribunal, the court must trust that arbitral tribunal as a chosen forum of the parties by not interfering excessively. Our law tells us when we can interfere. But on the other hand, one concern is that you will find that a large number of disputes involving even Indian parties are now going for adjudication through arbitration in international fora, such as the Singapore International Arbitration Center, the International Chamber of Commerce, ICC arbitrations, or the SIAC arbitrations, where the substantive law which is applied is Indian law, but the arbitration will take place under the auspices of an international arbitral institution. Well, I have no problem with the fact that parties can choose whichever institution that they want. If SIAC or ICC is doing an efficient job, why not? A business disputant can certainly go to whatever is their chosen place of, forum. But at the same time, we have to do some introspection in India, which is what your question really is. And which is to say that we have to create an adequately efficient arbitral climate. And that is not just in terms of having good arbitrators. We have great arbitrators in India, whether it's judges or lawyers or experts from industry. But we have to create the institutional space for arbitration.
You have to create efficient institutions which will facilitate arbitration. That's one. Insofar as intellectual property is concerned, I think India has been at the forefront we have some of the finest judges in India and some of the finest practitioners of law in the area of intellectual property rights. We have judges who have domain experience and expertise. You have lawyers with domain experience and expertise. You have law firms which have tremendous transactional experience in the IPR field. So I don't believe that there is, in that sense, a dearth of human resources. What we need to do is really to facilitate the expeditious resolution of business disputes. And, one of the problems which we have encountered over the last 75 years is that everything goes into litigation. That model, I believe, has to change. We have to place greater importance on non-litigative alternatives to adjudication through courts. Mediation, for instance. When two business houses have disputes, why should they bring these smallest disputes or the largest disputes to court as a matter of first instance? We should encourage them to do more of mediatory activities in an effort to resolve disputes. Mediation also has this benefit of preserving relationships. Very often when you have a dispute in an ongoing contract, suppose there's a huge contract for building an expressway or a huge contract for setting up, say, a power plant, there may be a dispute within that, but there's an ongoing relationship between the parties. So mediation can resolve the dispute and yet preserve the ongoing relationship between the parties. So we have to take recourse to alternative forms of dispute resolution as well, like mediation. What is constitutionalism in true sense of the term, and is there any threat to judiciary from any quarters? Especially lots of eyebrows are being raised in case of Article 19 and 21. Sorry, I didn't... Article 19 and 21, yes. Lot of eyebrows are being raised whether that is well protected under the law, and what is constitutionalism, and is there any threat to judiciary from any quarters? Well, if what you mean is that is there a threat to the judiciary from any political quarter, I would strongly say absolutely not. I have not the slightest manner of doubt. Threats in terms of our own functionality or lack of functionality, there are challenges. These are not threats. As I mentioned, the challenge of high pendency, the challenge of inadequate infrastructure. These are challenges which we have to confront as a developing nation, as a modern nation which is really on an upward curve. But I don't believe that there is a threat. And you mentioned Article 19 and 21. Last year, 21,000 bail applications were filed in the Supreme Court. Over 21,300 bail applications were disposed of by the Supreme Court. And the Supreme Court is really, in that sense, in the vanguard of personal liberty, leading from the front on emphasizing importance of personal liberty. And I think that's kind of very crucial. At the same time, the pendency of criminal appeals in the High Court, some of the High Courts like the Allahabad High Court, is a matter of concern. We have to find some solutions in terms of tackling that pendency. So I have a question to you also. Yes. उड़ीसा में एक मुद्दा कई सालों से चलता आ रहा है हाई कोर्ट बेंच को लेकर, वेस्टर्न उड़ीसा से, साउथ उड़ीसा से, इसे लेकर आपका ओपिनियन क्या रहेगा? देखिए, उड़ीसा में 30 जिले हैं. Odisha has 30 districts. Now, with technology, why should you have only one bench? With technology today, we have the ability to have 30 benches of the High Court operating at the same time. In the sense that we can decentralize the administration of justice by ensuring that cases can be filed in the High Court, not by coming physically to Cuttack, but from any part of the state. You can do it now. You have digitized case files. We have e-seva kendras, so that if a citizen does not have access to a smartphone or to a laptop or an iPad, you go to the e-seva kendra, which is attached to any court, and you can file your case electronically. I believe that suppose we prepare this model,
that in every district court, in every district in the state, you have one assigned courtroom where a lawyer can argue a case through video conferencing before the High Court. There you have a bench of the High Court in every district, which is a virtual bench. That will also ensure that young lawyers in the smaller districts, in far-flung areas of the state, also have the ability to develop and to argue cases before the High Court. So this will also not just be a matter of convenience for litigants, increasing livelihood for lawyers, but bringing about a social transformation in the position of the legal profession. So there is a huge change which can be brought out by the adoption of appropriate technology in promoting access to justice. What about, sir, maintaining the gender equality in Indian judiciary? अभी ओडिशा हाई कोर्ट में एक लेडी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में शायद 2. जी, आप कहते हैं वो सही है. उड़ीसा हाई कोर्ट में शायद 18 जजेस हैं, उसमें से एक महिला जज हैं आज. So the ratio is obviously very, very low. Now, what is the change which is taking place today? The change which is taking place today is in legal education. आप देख लीजिए, आप मेडिसिन MBBS देख लीजिए, engineering देख लीजिए, law देख लीजिए. You will find that the largest number of entrants, over 50% of fresh admissions, are from women in the law colleges today, which shows that parents and young people belonging even from the middle class or the low middle class are increasingly opting for legal education. When I was joining the legal profession, middle class parents would normally ask their children to become doctors, then they say engineering karo, और कुछ नहीं हुआ तो टहलते बस law college चले गए. That is changing now. That is completely changing now, because India now is becoming a financial services hub. And with India increasingly becoming the financial services hub and moving away from, traditional occupations, there's a great scope for women. Now, what is happening therefore is that women are entering upon the legal profession through legal education in very large numbers. District judiciary की आप recruitment देख लें आज, not only in a particular state but across India, you will find that most districts where recruitment is taking place in India today, over 50% of the new recruits are women. In some states, the recruitment of women is going up to 60% or 70%, which shows that if you give women a level playing field and an opportunity on an equal basis, women succeed like nobody else succeeds, right? Now, the challenge, many of these women who are now entering the district judiciary will become High Court judges 10 years down the line. 20 years down the line, they'll become Supreme Court judges. Now, for a lot of people, that's too long a period of time. But today's composition of the Supreme Court reflects the status of the legal profession when 30 or 40 years ago. I have just retired in 2024. I joined the legal profession in 1982. So today's Supreme Court is reflective of the patriarchal position of the Indian judiciary in the 1980s and 1990s. So if we have to bring about a change, we have to start with change at the very base of the pyramid, namely the legal education, the legal profession. Now, legal profession is also very critical because the legal profession is the nursery for appointing judges to the higher judiciary, like the high courts. Now, very often women are discriminated against in the recruitment to chambers. I know, as a matter of fact, women are asked a question, have you already had children? What will you do if you have children? This is wrong. We have to accept that women perform multifold responsibilities in our society. And we have to make sure that we create a profession in which women do not leave the profession when they are burdened with, familial responsibilities. And if we create, therefore, opportunities to women to grow, to prosper, we will have a more equal legal profession. Between 1950, last point which I wanted to make was, between 1950 and 2024, the Supreme Court of India had designated 13 women as senior advocates. Only 13 women as senior advocates. In February last year, in one selection, we designated 12 women as senior advocates.
In August last year, we designated another batch of 10 women as senior advocates. Now, these are the women who will be the agents of change. So it's important that as functionaries, as people of responsibility, we create opportunities for women. Not all of the women will succeed, just as not all of the men will succeed. But if you create that opportunity for women, more and more of them will assume positions of responsibility. Since we're running short of time, only last question we can take. I think there was one question here also, quick question, 30 seconds. Hello. 30 Sir, seconds. namaste. मैं स्वाधीन राउत हूँ, senior journalist of OTV. I have a question, sir. Sometimes all the documents are against the accused, but they are false and fabricated. In some cases, the judge know they are false. In such situations, how does a judge deliver the judgment? Will the judge base on decision solely on the document presented by the lawyer, or will they go against the document and deliver a fair judgment? आपके जीवन में ये बहुत सारे केसेस आए होंगे और आपको तथ्यों के आधार पर ये शायद ये जजमेंट देना होगा. I'll just briefly answer the question so that we can have some more questions also. You know, you always have two sides in a court. The other side always is there to point out if a document is fabricated. And therefore, the importance of a two-way dialogue in a court. Second, our law makes adequate provisions for dealing with cases of perjury, which is an offense, which is a criminal offense. Judges need to take it very seriously and punish and set examples of people who produce fabricated evidence in the court. One more question should we have quickly? सर सिंस दिस इज ए मीडिया कॉन्क्लेव मेरा एक सवाल भी रहेगा जल्द से आपसे जानना चाहूँगा आजकल जैसा मीडिया रिपोर्टिंग हो रहा है जजमेंट को कम हाईलाइट किया जा रहा है हियरिंग को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है उसे लेकर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे देखिए कोर्ट रूम में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं जो जजमेंट की पार्ट भी नहीं होती Yes, that's true. You see, in a court, there is always a dialogue. The purpose of the dialogue is not to tell the audience what the verdict is, but to unravel the truth. आप सवाल क्यों पूछते हैं कोर्ट में? आप सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आपको सत्य का शोध हो आपके हाथ से. Now, people tend to feel that what is said in the court is the final judgment, which is not so. But then, at the same time, you have to understand that the media wants eyeballs, right? What goes on in the court is sometimes catchy. They want to convey it. They need some masala, as you rightly said, some masala chai as well. And it's all right. It's part of democracy. It's part of this vibrant democracy that we all live in. Are you worried about media judgment kind of thing that is happening? Oh, no, not at all. I think the media is the bulwark of freedom in India. I think the fact that OdishaTV conveys the views of a diverse cross-section of society, and as I found today, you know, from a diverse political viewpoint and perspective. But अभी जैसे fake news का ज़माना चल रहा है. You see, fake news again, that's a problem of social media. Earlier, you had to print something in a newspaper, and the reach of the newspaper was to the subscribers of the newspaper. Today, the reach is infinitely larger. Algorithms, particularly in the internet and which are in use in artificial intelligence, algorithms can, you know, compile, collate, network information and relay information. So information is, in that sense, what is pervaded, not necessarily because it is true. So fake news is a serious problem. It can affect, as we have seen internationally, in other countries, it can affect the outcome of elections as well. But that is an issue which governments across the world are grappling with. And I'm not sure we have found a solution to it as such. There's one question there. Sir, extremely candid conversation. Thank you very much for that. Really enjoyed it. I have two questions for you. One is related to the profession, and one, if you allow, is a little personal because you also spoke about your father. So my first question is that you mentioned about the judgments getting translated into Indian languages. Now our constitution came into being in the year 1950. It's been more than 75 years. And our constitution has got fundamental rights. My name is Arvind, and I'm actually founder of a company that works on languages, Indian languages. Our vision is that India sees a day where all the Indian languages are equitable with English.
So we do firmly believe that even though we have our fundamental rights which are outlined in the Constitution, the underlying premise is that those fundamental rights can be exercised only in English. Let us say it is right to justice, as you rightly mentioned earlier, and also right to education. So I would definitely like to know your views about exercising fundamental rights by someone who does not know English in this country. My second question is personal, and it is a very proud moment for any father to see the son reach the pinnacle of the judiciary. And had your father lived, I'm pretty sure that it would have been a very proud moment for him. And in having also seen him serve the Chief Justice of India, how do you think, had he witnessed your tenure as the CJI of India, he would have judged your tenure? On the first point, actually, your question itself answers itself, in the sense that if we have to truly witness the realization of fundamental rights, we have to ensure access in languages which people speak and understand. And I think that has been one of the deficiencies of the judicial process, namely, at least at the higher judiciary, in the high courts and the Supreme Court, the overemphasis on English. In the district judiciary, proceedings are conducted almost all over the country in the local language. Now, that has to therefore send the right kind of message across, that unless we reach out to people in languages which they understand, how can they realize their fundamental rights? And therefore, this process of translation from English into Indian languages is part of that. Now, I was also trying to explore whether we can have, even in the course of live streaming, transcription from speech to text, so that what is spoken in English can be yet relayed in that state in that particular language, which is not a very difficult thing to do. Your second question, well, my father's age and times were very different from the age and times in which I have served as the Chief Justice. I'm sure, he would have been very happy to see me occupy the highest judicial office in the country, but perhaps you would have been a little concerned at the kind of challenges which we have to face, which he never faced during those times. The law has become more complex. You have social media, greater scrutiny, and so many new problems which have arisen. The burden of work has increased so much as compared to what it was in the 1970s or 80s when he was a judge. But overall, I'm sure that he would have had a sense of satisfaction, because I think the great thing about being a judge is that you have a role to play in social transformation, the transformation of our society for the future. And second, the greatest satisfaction about being a judge is about being of help to people in need. So for all the big cases which, we have decided, which were referred to at the beginning, I think the real cases which, stick in the heart are those small cases dealing with individual problems. A disabled student seeking admission to medical college, a Dalit boy seeking admission to IIT Dhanbad, another tribal student getting admission to IIT in Mumbai. These are the sort of cases which come to the court, which really make you believe that the courts have a very vital role to play in social transformation. Since you speak so candidly, Justice Chandrachud, ये सवाल जवाब का सिलसिला खत्म ही नहीं होगा, but since you have to also to catch up the flight, we have to end the conversation here. Thank you very much for joining us today and speaking. Thank you. So many very